Dear student, today we are going to discuss our new topic, registers. Previously I have sent you the notes for flip-flop. I think you have studied all. Okay. Now if you have studied flip-flop, we can know that flip-flop can store only one bit of data. And it store only one bit, either 0 or 1. Okay. Only one bit of data is stored in a सिंगल फ्लिप फ्लॉप. एक फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक ही बिट का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. पर जैसा कि आप जानते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करना होता है. तो अगर हमें एक बिट से ज़्यादा डेटा को स्टोर करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप को लेकर उनका एक कम्बिनेशन बना लेंगे. ठीक है. और इस कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर. यहाँ लिखा हुआ सच ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर. ग्रुप मीन्स मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप. और जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे उतने बिट वो स्टोर कर पाएगा. द n bit register will consist of n number of flip flop and is capable of storing n bit of data. ओके. अगर हम किसी रजिस्टर में n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं तो वो n बिट डेटा को स्टोर कर सकता है. ठीक. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लिप फ्लॉप एंड रजिस्टर? फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर only one bit of data. Register can store more than one bit of data according to number of flip flops added in the group. If we add 4 flip flop, 4 bit of data can be stored by register. Now, next, this is general diagram of a 4-bit register. Now you see that at the top it is written D1, D2, D3 and D4. What that stand for? That stand for we can give 4 bit of input from that line. 4 bit of input from that line. And from Q1, Q2, Q3, Q4 we can obtain 4 bit of data as a output. Okay. D1 to D4 is parallel input and Q1 to Q4 is parallel output. Q1 is signified as MSB. The MSB stands for most significant bit and LSB is stand for least significant bit. When you group the data, we have to mention the starting and end of the particular group of data, and it can be obtained by MSB and LSB. Okay, next page. Now, okay. Now, load input is used to load data parallel, while clear is used to reset all bit in register flow. We know that load input, it means कि we have to load the data in parallel, and clear is used to reset all bit in register to 0. S1 is serial input from which data can be entered bit by bit. What is the difference between parallel input and serial input, or parallel output or serial output? It means that parallel output in 4-bit register 4 bit of data can be entered simultaneously. यानी कि एक साथ हम 4 बिट ऑफ डेटा को इंटर कर सकते हैं और 4 बिट ऑफ डेटा को पैरेलली हम प्राप्त कर सकते हैं. वी कैन एग्जिट द 4 बिट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली. एंड सीरियल इनपुट मीन्स कि व्हेन वी हैव टू इनपुट द 4 बिट ऑफ डेटा, वी इनपुट इज सीरियल. फर्स्ट बिट डेटा विल गो, देन सेकेंड विल गो, थर्ड विल गो एंड फोर्थ. दे कैन नॉट गो एक साथ. वो एक साथ नहीं जाएंगे, एक के बाद एक जाएंगे लाइन वाइज, और वैसे ही एक के बाद एक आउटपुट के रूप में मिलेंगे. दैट इज डिफरेंस बिटवीन सीरियल इनपुट एंड पैरेलल इनपुट, और सीरियल इनपुट आउटपुट और पैरेलल आउटपुट. क्लॉक फैसिलिटीज. क्लॉक फैसिलिटीज मीन्स when a clock signal goes high or low according to which data will be sent or retrieved.
Now one type of register is a shift register, which is most widely used register. And what is a shift register? Shift register is also a combination of flip-flop. Okay. Now see, shift register are classed as a sequential logic circuit, and such they are constructed using flip-flop. It is sequential logic circuit, or it is constructed using flip-flop. Now shift register are used as a temporary memories and for shifting data to the left or right. Shift registers are temporary memories. Temporary memories such as RAMs or memory used in a calculator are constructed using shift register, which cannot store data permanently, but when the execution of program or temporarily we have to work with, we can use it. Shift registers are also used for changing serial to parallel data or parallel to serial data. Parallel data, if we get 4 data simultaneously but we want that data come in serial one by one, we can use shift register. Or when input is given as a serial and we want that all 4 data will come simultaneously, we use register. It means it can convert the serial data into parallel and parallel data into serial. Okay. Now, first one thing you should know that how the shift register is used and how it can shift data from left to right. Now, for example, take a calculator. For example, you have to add 3 to 5. 3 to 5 and plus 1 to 5. So first you will type 3, then you will type 2. So when you type 2, what you see that 3 is shifted to the left, generally to the left, and 2 will come to right, and then you will type 5, it 2 again will shift it to the left and 5 will come. So this is shifting. When you type 3 to 5, first 3 will show, then it is shifted to the left, then 2 will come, then again when we type 5, 2 will be shifted to the left and 5 will come. So this is the register, shift register work. Using shift register we can shift all these data. Now there are 4 types of shift registers, or we can classify shift register as 4 types. First one is serial in and serial out. But as you can see in diagram, that in serial in, data came to register serially from left and came out serially to the right. Data comes serially from the left and came out from serially out. This is an 8-bit register. You can see that 8 bit of data can come in and 8 bit of data can come out. Data enter in serial bit by bit and data exit in serial bit by bit. Okay. तो यू कैन सी, देखो उधर लेफ्ट में सीरियल डेटा जा रहा है, यानी एक एक बिट जा रहा है, और राइट में एक एक बिट बाहर निकल रहा है. ओके. नाउ सेकेंड वन इज सीरियल इन पैरेलल आउट. अब वहाँ देखो लेफ्ट में एक एक बिट डेटा हम इनपुट दे रहे हैं और ऊपर से सारा डेटा एक साथ आ रहा है, यानी फर्स्ट all 8 bit will go inside the register and parallelly they will come outside. Okay. Now one is parallel in, serial out. Parallel in, one 8 bit of data will come to the 8 bit register parallelly, यानी simultaneously. एक साथ 8 बिट आएंगे पर वो एक एक करके आउट होंगे, एक एक करके वो आउट होंगे. तो दैट इज पैरेलल इन एंड सीरियल आउट, कि 8 बिट के डेटा एक साथ आ जाएंगे लेकिन एक एक करके वो बाहर निकलेंगे. जैसे आप टॉप में देख रहे हो कि 8 बिट का डेटा एक साथ आ रहा है, लेकिन राइट से सीरियल वाइज एक एक करके निकलेगा. एंड फोर्थ वन इज पैरेलल इन पैरेलल आउट,
यानी 8 बिट का डेटा एक साथ आएंगे पैरेलल इन में और एक साथ निकल जाएंगे पैरेलल आउट में। ठीक है, अब तुम लोग आगे क्या इसको थोड़ा डिटेल में बुक से देख लो और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।